Hi, this is Shanid. Welcome back to Zero Budget Productions. Hi, this is Sandeepan, and this is the 10th episode of Walking the Streets. So, the guest for today is Rudraksha Das. He studied photography from Belur Mott and has been practicing the same for quite some time now. बहुत टाइम प्रैक्टिस कर रहा है ये लड़का. उसका फोटोग्राफ्स बहुत सही है. आप लोग देखिए, देख के खुद ही जज करिए. हाँ, मतलब उसका फोटोग्राफ्स देख के ना वो मतलब लालच आता है कि इसका एक प्रिंट होता तो बहुत सही होता. थोड़ा रखते घर पे. अभी रुद्राक्ष का सीन क्या है, हम लोग का जो पिछला वाला वीडियोस था ना, लाइक अबाउट वाई क्लिक एंड ऑल, तो ही पार्टिसिपेटेड इन दैट. उससे पहले आई डो नॉट रिमेंबर क्लियरली, बट उसका नाम कहीं ना कहीं पे सुना था मैं. तो उधर पे ही पार्टिसिपेटेड एंड ही गॉट टू नो, मतलब उसका कुछ पोजीशन आया था, लाइक ही गॉट वन ऑनरेबल मेंशन. हाँ हाँ, तो वो सब हुआ था. एंड आई वाज द वन हु कॉल्ड हिम अप कि भाई कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सिक्योर्ड लाइक द टॉप 10 पोजीशन, बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एंड ऑल. फिर उससे उस दिन मिला ये वो. फिर हम लोगों ने प्लान किया कि एक दिन मैदान जाता है, मीट वीट करता है, फ़ोटो खींचेगा. फिर मैं थोड़ा लुढ़क गया था बीच में, तो प्लान थोड़ा डिले होते होते अभी तक हुआ नहीं पूरा प्लान. तो फिर मतलब एक दिन अचानक ख्याल आया कि इसको एक बार बोल के देखता है अगर ये वीडियो के लिए राज़ी होता है. अभी ही इज़ फ्रॉम विद्या मंदिर एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर विद्या मंदिर फोटोग्राफी क्लब. उन लोगों का एग्जीबिशन कौन लेवल पे होता है. वो तो प्रेसिडेंट भी रह चुका है ना वहाँ पर शायद. हाँ, देखा भाई का थाग लाइफ अलग है. तो फिर उसको टेक्स्ट किया कि भाई ये वो मतलब तुम थोड़ा कर देगा ये, एंड ही ग्लैडली एक्सेप्टेड कि हाँ भाई करेगा, क्यों नहीं करेगा ये. एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू हैव हिम ऑन बोर्ड. फिर उसको बोला कि भाई तेरा इंस्टाग्राम आईडी या फिर कुछ दे, हम थोड़ा फॉलो करके रखता है. तो इंस्टाग्राम में जाके मैंने ही सर्च्ड माई आईडी, आई सर्च्ड हिज आईडी एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि वी फॉलो ईच अदर लॉन्ग बैक. मतलब बहुत दिन से हम लोग फॉलो करते हैं, बस इंस्टाग्राम हैंडल्स याद है, नाम या फिर पर्सनल कोई टर्म्स नहीं. बोला क्या अच्छा, बोला हम बोला भाई तेरे को तो फॉलो कर. बोला हाँ भाई हम भी तेरे को फॉलो कर. बस जानता है. मेरे साथ भी सेम केस है. सानिद मेरे को बोला कि रुद्राक्ष का इंटरव्यू करेंगे. मैं बोला ये नाम सुना लग रहा है. फिर याद आया कि वो मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों में हम एक दूसरे को मतलब फॉलो करते हैं, पर वही पर्सनली कभी मिले नहीं थे और इतना पता नहीं था कि ये वही है जो यही होता है. हम लोग इतना ऑफ ग्रिड आदमी लोग जान पहचान है, लेकिन कभी उतना निकलते नहीं. हाँ, तो अच्छा हुआ अभी अच्छे से जान पहचान हो गया, साथ में फ़ोटो खींच सकेंगे. और एक स्पेसिफिक चीज़ जो बोलूँगा, देख हर फोटोग्राफर का ना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है कि इसका ये उसका भाई एडिटिंग ना थोड़ा आँख में लगता है. तुम देखेगा मतलब ये ऐसे यूनिक स्टाइल ऑफ एडिटिंग हिज फोटोज. और उसका मतलब वो होता है ना, थोड़ा सरियल फील होता है और मतलब बहुत सही माने कामनेस है उसके फोटो. एग्जैक्टली, ही मेंटेन्स अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द एडिटिंग, और बहुत सुंदर लगता है भाई, इसलिए उसका फोटोज. एनीवे, मेरा हिंदी फिर से लुढ़क गया. प्रैक्टिस करना ठीक है. अभी और बहुत ज़्यादा बात नहीं करते. हाँ, लेट्स गो टू द वीडियो स्ट्रेट अवे. चलो, होप यू एंजॉय. सी द पिक्चर्स. Hi, my name is Rudraksha Das and I'm a photographer based in Kolkata. I really want to thank Zero Budget Productions for finding me capable for this video. So I'm really honored to be here today. And about knowing Shanid, it's a really funny journey. So the funniest thing is that we both used to follow on Instagram for since a really long time, but we never really talked till one of my photographs went to NSHM and I won the third prize. So that's a different matter. The funniest thing is that Shanid calls me up 3-4 evenings before the prize distribution ceremony, and he tells me that hello, I'm coming from NSHM and your photograph has made it to the top 10, so please be there on the day. So I ringed him back to ask for the venue. Then he was like, oh bhai, tu Deepror bondhu, aage bolbi that formally kena kotha bolchilam. So basically that's the introduction that I had with him, and he's a genuine guy. So yeah, thank you. So my journey started back in 2017, but seriously I started doing photography from 2018. But before that, I never had a camera of my own, so I used to click pictures with my smartphone, and I used to borrow cameras from my friend and go out to shoot. And I really want to thank my friends for being that generous with their camera with me. And yeah, 2018 was the time when I went to my college, and there I realized that in our college photography is a really important subject there, and that quite inspired me to follow this art. So yeah, it's been 3 years now and I'm having a great time.
About my inspiration, there are many photographers who I get inspiration from, but two of them has to be Joseph Kuldelka and Sebastião Salgado. And apart from them, since I am more, my orientation is more towards documentary photography, documentary and street. So I find inspiration from Somashankar Bose, has to be Ronnie Sen, and one of my seniors, Somakanti Bhattacharya. He has inspired me a lot. And yeah, photographers around me have inspired me a lot. My parents inspired me a lot. They never really demotivated me and helped me to follow my passion. And obviously my friends who have been throughout. So yeah, thank you. So basically street photography is all about decisive moments and all, but one problem which I personally faced dates back to 2018 when I was interning with National Geographic for a photo camp. So basically I was interning there as a writer, and along with my photographer I had gone to Chinatown to document some of the people there, interview quite a few. So I went to one of their homes to talk with them, and I think around for 15-20 minutes they were entertaining us, but with very monosyllabic answers, and they were quite not comfortable. So after a point of time they literally kicked us out. So after I came back, I realized what went wrong actually was that I had my photographer out. It was in front of me, and I had my pen and everything, and my ID card was there. So that was one thing which made them very conscious, and I never really interacted with them before shooting the video, documenting them. So this is one of the things which I later realized, that when you are going to shoot, even if you're shooting street or going to document some festivals and all, you need to be there in the environment, get accustomed to it, and then start shooting. So that will help a lot to overcome these issues and stuff. I still face these issues these days, but it's much more balanced and my approach has changed a lot. So yeah. One thing that street photography taught me is patience, which is really important while documenting or doing street. It really taught me to be in an unfamiliar environment, getting accustomed to it, and then clicking pictures, which is also very important. And apart from that, it taught me how to respect different cultures and people, to think like them while shooting, which brings out the raw emotions, which is very important. Not seeing from a photographer's perspective, but being in their own shoes and living a life of their own. So these are the few things which taught me and is helping me in my day-to-day life too, and I'm really grateful for that. The title of this photograph is Blinded. So as you can see, this photograph was clicked using flash. So initially what I had done while clicking this picture is that I had used a red cellophane paper over my flash and a yellow cellophane paper over my lens. But while editing the picture, I found the colors to be really harsh, so I changed it to monochromatic, and that really helped. It really helped to get that surreal feeling, a dreamy effect to the picture. So this is one of my personal favorites. The title of this photograph is Eden's Playground, and it has a reference to the Garden of Eden. It's a biblical reference. And what I really like about this picture is that the beautiful color palette it has. It's so calming and soothing, and what really stands out are the two kids who were playing around, and they were wearing red t-shirts. So and it really made a huge contrast to the surrounding bluish tone which I tried to capture. So I had shot this photograph using my iPhone 6s, and I was standing on the opposite side of the car, and I shot this photograph through the car's window. The title of this photograph is God of the Streets, and you can really well understand why is it so. So what really interested me is that the reflection of the building had already fallen on the screen, but what really attracted me is that there was an idol of Ma Kali on the opposite side. So I was waiting there patiently for some movement, and at that very moment I was really lucky that this old man happened to just pass, and I just released the shutter then. So this is quite an example of decisive moment in street photography that we really talk about, and that is what I have tried to capture. So I love capturing
minimalistic frames because I find them really soothing, calming, and they have a really surreal approach to it, feel to it. So I had titled this photograph as Peace Bearers, and I find this frame to be really peaceful and calming. And I had used negative space while framing this photograph, and for that very reason I had edited this photograph also in monochromatic, so that the eyes are guided directly to the birds and they are not disturbed by some unwanted colors or different tones. So this particular photograph is really close to my heart, and I love using flash in my photography, but I am new to this, so I have been experimenting with flash for a really long time, and this happens to be just a product of my experimentation, you can say. So this was shot very early in the morning, I think around 4:30ish, and I had used a red cellophane paper over my flash to capture this photograph. And the man standing in front of the tree is one of my college seniors. So what really happened is that he was wearing a red hoodie. So when I released the shutter and the flash was fired, I saw that he had already been overexposed, and that really intrigued me to edit the picture in such a way so that I can really burn out the figure there and keep the tree in the red color that had been caused due to the red cellophane paper, to give it a more intense feel to it. And the title of this photograph is The Formless Ones. So the title of this photograph is Man with the Antlers, and this too was shot at Maidan early in the morning. So what was happening is that this man was carrying away branches of a tree from a cricket pitch because a match was about to be started, and I was waiting there and observing him keenly. So while I was doing that, I saw this lovely branch and I was waiting for him to carry that away too. And when he picked it up to carry it away, I clicked this picture, and while clicking this picture, what really happened is that the branch was just behind his head. So this gave it a really deer-like feel. So I felt like this man actually looked like a deer with antlers popping out of his head. So out of the many photographs of horses I have shot at Maidan, this happens to be my favorite. Initially I thought of keeping this photograph in monochromatic too, but when I saw this photograph on my laptop screen, on larger screen, I found the colors to be really soothing and calming, and they weren't disturbing the eyes. So I kept it in color in the natural way, and I didn't edit much. The only thing I did was that I reduced the structure a bit to give it more of a dreamy effect. And there was something unique about this horse, maybe because it was too skinny or maybe just too calm. He was just enjoying his breakfast, and I just like the feel of this photograph. I had clicked this photograph in Kerala this year itself. It was shot in the foothills of a hill station known as Nilakkal, and I had used my iPhone 6s for shooting this because I wasn't carrying my camera along with me on this trip, which I regret now. That's not the point. And by now you all know that I have an affinity towards minimalistic frames because I find them really poetic, and the same goes for this one too. So while composing this frame, I had wanted to keep the cow in the middle with the dense forest behind, which I really managed to do. And while I was clicking the picture, I had already planned out how would I edit the picture, and that really helped me in the post-processing period. This is a typical Maidan frame on a winter morning. I had shot this picture to give an essence of this place, what it feels like to be in Maidan so early in the morning. And as we all know that it's really beautiful during winters. Maidan is really beautiful during winters, and it's kind of a paradise for us photographers. But this particular photograph has a really special place in my life because this photograph had stood third in the Y-Click
photography competition held by NSHM Knowledge Campus, Calcutta, and that also got me my first ever DSLR. So this photograph is one of my personal favorites. So this photograph was clicked at Maidan in December last year. It was a really foggy morning that day, and what really interested me while capturing this moment is that there were a lot of crows flying around. And since the fog was quite dense, I kept the shutter speed really low to capture the motion of the flight of the crows. And to make it more poetic, I edited the photograph in monochromatic. So some tips for beginners. The first thing that I would like to say is that, which is very important, that whatever you're doing, there should be a sense of purpose behind it. It should be guided by a sense of purpose, and so that you have a really clear idea about what you're shooting, what you're documenting. And you should learn to be very patient when you're doing street photography, because only then will you get the raw emotions of the street. And being a literature student myself, I have got inspiration from poems, movies, novels, and obviously watching photographs of different photographers. So I think that when you're going out to shoot, which will also enrich your thoughts and ideas behind anything, that you should read more. That is very important. You should read, watch movies, watch paintings, which paintings help a lot while doing photography. And obviously watch the masters. Learn from them and then implement your own ideas. And last but not the least, enjoy what you're doing, which is very important. And just don't be stressed out because you're starting off, because it's a lovely journey and you'll enjoy this throughout. Thank you. कैसा लगा बोल? मैं तो हर बार की तरह यही बोलूँगा, फोटोग्राफ बहुत सही है। और शुरुआत में जैसे हमने बोला था कि उसका हर एक फ़ोटो में एक कामनेस दिखता है, वो तो साफ आपको भी नजर आया होगा। दिस डजंट लुक लाइक अ पेंटिंग, दिस इज अ पेंटिंग भाई। दिस इज सही में क्या फील आता है भाई। और मैंने क्या बोल, एक तो सारियल मतलब गेटिंग मैंने लॉस्ट टाइप का एक मतलब होता है ना। तुम एडिटिंग का भी जो बोल रहा था भाई, बोला ना इसका एडिटिंग स्टाइल। और ये बीच में क्या गाय है क्या? गाय लेके मजाक नहीं भाई, नहीं जिंदा रहे। गाय लेके मजाक नहीं कर रहा है। अपना देश में गाय लोग का बहुत इज्जत है भाई। गाय लेके नो मजाक ब्रो, जेल में ले जाना। फोटो का मजा नहीं उड़ा रहा है, हाँ किसी और का उड़ा रहा है, समझ जाओ। ओल्ड मॉन्क यस। But नहीं, on a serious note, very good picture, the contrast और भाई the placement of the subject, क्या इसका एक फील है भाई फोटो में, बहुत सही लगा। मतलब देख, उतना being very honest, कुछ स्ट्रीट का वो इतना बहुत कुछ एलिमेंट है नहीं, लेकिन देख के अच्छा लग रहा है। मन सिंपल एज दैट, बहुत सही लगा भाई। सारी वाले सब कुछ, ये फोटो बहुत सही है, क्या ही बोले। And I'm not sure what he tried here, but this looks like a juxtaposition to me. तो हाँ, पूरा juxtaposition looking like horns and the branches coming out of the man's body, और see वो figure to ground बोलते हैं ना, बहुत सही maintain। और ये जो फोटो है, इसको if you come to think about it very deeply, बहुत meaningful picture है। मतलब the guy is looking like the bark of a tree। हाँ exactly, वही तो बोला। तो बहुत डीप जा चुका है भाई। बढ़िया, मजा ही आ गया। मजा आ गया, सही फोटो है भाई। ये फोटो भाई सी सिंपल एलिमेंट्स लाइक दिस इज हाउ, मतलब ये भी पिछला वाले को थोड़ा सा रिसेंबल करता है। हाँ, वही टोन और उसका एक पर्टिकुलर ग्रे स्केल में मतलब हाथ बहुत एकदम सही है, बहुत सही है भाई। वो ये देख, कुछ उतना एलिमेंट्स है नहीं, बट वो सारियल फील और वो एस्थेटिक वाइब्स जो आ रहा है ना भाई, मतलब मजा आता है भाई। बहुत सही भाई। और दिस वन आई थिंक यही वो दिया था एग्जीबिशन में, बहुत सही है भाई। पोजीशन मिला है ऑब्वियसली, सही फोटो ही होगा। बहुत सही है भाई, बहुत सही है। द प्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द बैकग्राउंड, बहुत सही। इसके बारे में हम और क्या ही बोले, हमारे जज ने इसको जिता दिया है, तो अभी बाकी तो समझ ही जाइए हम लोग कौन सा जज है। हाँ। और माय फेवरेट रुद्राक्ष को भी मैं बोला था भाई, आई एम अ फैन ऑफ फ्लैश फोटोग्राफी, आई हैव बीन ट्राइंग इट फॉर सम टाइम, और दिस इज समथिंग भाई बहुत सही भाई। एंड द वे ही एक्सप्लेन्ड दिस पिक्चर, हैट्स ऑफ फॉर दैट मैन, बहुत सही है भाई, बहुत सही है। And see again the placement of the subject and the background, both like a human and a tree, the red colors and all, यही से सब निकल रहा है, ब्रांचेस वगैरह, बहुत सही है। क्या बोलेगा भाई,
बहुत सही है, बहुत फोटोग्राफी सेंस है, इतना तो समझ आ रहा है, प्लस अच्छा फोटो खींच रहा है, तो मतलब क्या Obviously. वेरी प्राउड ऑफ यू एंड प्राउड ऑफ योर वर्क मैन। बहुत सही, मतलब हम लोग कोई है भी नहीं सब बोलने का, फिर भी भाई मतलब जब देखते हैं लोग ऐसे अच्छे फोटोज खींचते हैं तो अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। लाइक यू नो वन ऑफ अ काइंड, नॉट फॉलोइंग द मेन स्ट्रीम थिंग्स एंड ऑल। एग्जैक्टली, जो अच्छा लग रहा है वही खींच रहा है, एंड दैट इज लाइक हिज सिग्नेचर स्टाइल आई गेस। बहुत सही लगा एंड मजा आ गया भाई। दैट इज नेसेसरी, यू नो, मतलब भीड़ के साथ चल के तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। यू डू समथिंग दैट नोबडी हैज डन और नोबडी हैज ट्राइड, तभी तुमको जाके अच्छा सक्सेसफुल कुछ बन सकोगे। बहुत सही लगा भाई। और अनदर थिंग रुद्राक्ष, लाइक that since now I know him, like the dedication and the passion he has for this photography is भाई। और उससे अच्छा चीज़ क्या है, like he has dedicated time for this, not just for practicing it but also for you know studying it thoroughly, like books and all। ये वही he is a student of विद्या मंदिर ना, तो उधर का तो है ये सीन, अनपढ़ गवार लोग उधर से निकलते नहीं। फोटोग्राफी लेके अगर पढ़ाई किया है तो उसका नॉलेज भी वैसा ही होगा। और वो भाई जिसके पास आई मीन जो लोग उसको पढ़ाता था, लाइक उन लोगों के साथ तुम घूमेगा भी तो बहुत कुछ सीख जाएगा, तो दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क इटसेल्फ। तो भाई गुड वर्क ब्रो, गुड वर्क, बहुत बहुत अच्छा लगा फोटोग्राफ्स। और नाम रोशन करो, और नाम रोशन करो। एंड अ ह्यूज थैंक यू फॉर बीइंग ऑन अ चैनल, एंड आई थिंक नेक्स्ट सीजन में भी उसको फिर बुलाएगा। ऑब्वियसली डेफिनेटली बुलाएंगे, जिस तरह से काम कर रहा है और इम्प्रूव तो ऑब्वियसली डे बाय डे हो ही रहा है। एवरीवन इम्प्रूव्स, देयर इज नो एंड ऑफ इम्प्रूविंग एंड देयर इज नो एंड ऑफ प्रैक्टिसिंग, लर्निंग, नो एंड ऑफ लर्निंग। करो भाई, बहुत बहुत मतलब वेरी हैप्पी, लाइक आई नो यू गाइस एंड ऑल। तो चलो, एंड कीप फॉलोइंग मी, मेरे को अनफॉलो मत करो। यस मेन चीज बताना है अभी, ठीक है? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज, अगर पसंद नहीं भी आया फिर भी कर दो ना। फॉलो करने में पैसा लगता है क्या? कर दो, फॉलो करने में बस हम लोग खुश हो जाएगा, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन। अच्छा खत्म करने दो, बताने दो क्या किसी को पता नहीं रहेगा तो क्या कि लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का है, कमेंट करने का है और शेयर करने का बस। एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट, लाइक इनमें से अच्छा अनदर थिंग, इफ यू वांट, जो बोल रहा था ये देख के लग रहा है कि एक प्रिंट होता तो मजा आ जाता घर पे। तो इफ यू वांट एनी ऑफ दिस फोटोज इन फॉर्म्स ऑफ फ्रेम्स, प्रिंट्स, फोटो बुक, जो भी चाहिए होगा, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर यू कैन जस्ट डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम, मी फ्रोडो आई मीन सॉरी संदीपन और रुद्राक्ष, किसी को भी तुम करो, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, द लॉजिस्टिक एंड द डिलीवरी एंड एवरीथिंग। सो और तो कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, बस वही सब्सक्राइब करो। और रुद्राक्ष का भी हम लोग सब जो इंस्टाग्राम हैंडल्स है, फेसबुक का आईडी है, सब कुछ नीचे लिंक पे दे देंगे, तो उसको जाके फॉलो करो, सपोर्ट करो, यस, शो सम लव, अप्रिशिएट हिज वर्क, लाइक इट्स वर्थ द अप्रिसिएशन। यस एग्जैक्टली, वही ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ta-da।